Question number 8, exercise 15.1. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. एक बैग में 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है. Look here. If this is bag and this contains how many red balls? 3 red balls. 3 red balls and 5 black balls. 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 A ball is drawn at a random from a bag. एक बॉल को रैंडमली ड्रा किया गया. किस में? बैग से रैंडमली ड्रा किया गया, यानी कि बगैर देखे उसमें से बैग में से एक बॉल को ड्रा किया गया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड. वो जो बॉल होगी वो क्या होगी? रेड होगी. ये पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या चांस होगा जो हम उसमें से बैग में से बॉल ड्रा करती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड बॉल होगी, और दूसरी क्या, नॉट रेड, कि वो रेड नहीं होगी. 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के. सबसे पहले जो नॉट रेड है, नॉट रेड के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. सबसे पहले सुनो, हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, इसका पहला पार्ट. पहले पार्ट में हमको ये जो टोटल नंबर ऑफ बॉल है, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं बैग में, सबसे पहले वही लिखेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. दीज आर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ, सो यू कैन राइट टोटल नंबर ऑफ balls. Total number of balls means total number of possible outcomes. Total number of balls equals to 3 plus 5. That is 8 balls. Which means that total number of possible outcomes equals to 8. असल में total number of possible outcomes कितने हैं? 8. Total number of possible outcomes equals to 8. Now you have to find in part first. If we draw a ball randomly, what is the probability that we get a which ball? Red ball. You have to find the probability of getting a red ball. So part first here we will take part first. So you can write in part first, let E denotes the event. E denotes the event. Let E denotes the event. This E denotes the event. सबसे पहले इवेंट को हमेशा यहाँ पे डिनोट करना होता है. जो जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट को डिनोट करो. मैं ई से डिनोट करूंगा. क्या करूंगा? लेट ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल. गेटिंग ए रेड बॉल, यानी कि ई जो है, ई डिनोट कर रहा है इवेंट को कि हमको रेड बॉल मिली. क्या मिली? रेड बॉल. यानी कि मैंने किससे डिनोट किया? ई से इवेंट को, और इसी ई की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है. ये देखो, लेट ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि कितने आउटकम जो है इसके हक में है. कितने आउटकम जो है जो इसके हक में है. कितने रेड बॉल है बैग में? कितने रेड बॉल है बैग में? 3 रेड बॉल है. कितने? नंबर ऑफ फेवरेबल, यू कैन राइट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई, यानी कि जो कि ई के हक में है वो है 3. यहाँ पे 10th क्लास में है क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो यू कैन यूज दिस कंसेप्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई. अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको निकालनी है. देयरफॉर यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू, यहाँ पे दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई, यानी कि जो इसके हक में है फेवरेबल, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. हियर यू कैन राइट number of favorable outcomes to E divided by total number of possible outcomes. Total number of possible outcomes. Total number of possible outcomes. Look here, number of favorable outcomes to E, that equals to what is the number here? 3 divided by
total number of balls, that is total number of possible outcomes, that is 8. This is the required probability of an event of getting a red ball. That means probability of getting a red ball equals to what? That is 3/8. Another concept is you have to use here this concept, classical approach of probability, that number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes. Now in the part second, you have to calculate probability of not getting a red ball. That is not getting a red ball means black ball. Whether you get this, or you can use the concept of complementary event, Look here, if E denotes the event of getting a red ball, then E bar what denotes? Of not getting a red ball. That means in the part second you have to also calculate what is the probability of that the ball drawn is not red, which means not getting a red ball, which means that you have to calculate which probability? E bar or probability of getting a black ball. So you can also use that concept, probability of getting a black ball. You can use this concept, how many black balls are here. That means you can use that concept also, or we can use complementary probability concept. Whatever you can wish, you can use here. Which concept I am going to use? It depends upon you. Complementary. So we can use complementary probability. So now you can use. We know that in part second, we know that probability of E plus probability of E bar equals to what? 1. Probability of E plus probability of E bar equals to 1. Now probability of E, this equals to what? 3/8. As we have already calculated that probability of E equals to 3/8 plus probability of E bar. You have to calculate actually the probability of E bar equals to 1. Probability of E bar equals to what? That is 1 minus 3/8. Now you can cross multiply this. This will become probability of E bar equals to what? Probability of E bar equals to 8 minus 3 divided by 8. That equals to 5/8. Which means that this E bar denotes the probability of not getting a red ball. Then that means probability of getting a black ball. As there are only 2 balls in the bag, either we get red ball or we get black ball. Which means that in part first we calculated probability of red ball. In part second we calculated what? Which probability? Probability of getting a black ball. So you can write probability of not getting a red ball, or getting a black ball. That is one and the same, getting a red ball. That's why there are only how many black balls? 5. And if you use that concept also, that is once again 5/8. Whether you get this? This was question number 8. Whether I repeat this? Okay.